everyone. Guys, in my class today I have done phonetics or phonic sounds, and so today I'll be teaching you. I'm going to give you this lesson to practice, and while you'll be listening to it, please do watch how I'm going to when I am pronouncing a word, when I'm saying it, what is the movement of my tongue, my how much I'm opening my mouth. You have to take care of this also, because that's how the way you have to pronounce is the way and where you have to touch your tongue, how soft it has to be. All right, everything I'll be explaining that to you. Just understand while I'll be explaining that too. Okay, so the first alphabet I would say is like A. All right, so A says A. The sound of alphabet A is A. Okay, A. When I say A, I actually stretch my mouth and look at my tongue. I touch my tongue at the back of my lower teeth, and then I just press it there and I say air, air. All right, it's come from the stomach, air. And when I say air, my stomach goes in. All right, so it's all about air, the throat. That makes your pronunciation, the clarity of the word. Okay, the sound is very, very important. So A says a, a, apple. Now whenever you say a word, you have to please take the sound. Okay, जो भी आपकी साउंड है, जो अब मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसे मैंने ए बोला तो आपको ए को ही पकड़कर उस वर्ड को बोलना है. ओके, दैट मीन्स ए सेज ए एप्पल. तो जब मैं एप्पल बोल रही हूँ तो वो ए का ही साउंड लेके मैं बोल रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट इज बी. नाउ बी सेज b. You have to close your lip tight, okay, like this, and then throw air outside. When you put your hand in front of your mouth, you'll feel a throw air. आपको यहाँ पे throw महसूस होगा. Okay, and it's and also it comes from the stomach here. Okay, when you put your hand here, it will go in and out. Okay, B says b, book, b, ball, b, basket. Okay, so we have to again उस B को के जो sound है b, वो ब को पकड़ते हुए, ब को पकड़ते हुए हमें बोलना है वो वर्ड को. ओके, वहाँ चेंज नहीं कर देना है. B says b, book, right? Next, C. Now the C sound comes from here. Okay, it's k, k, k. C says k, cat, at, cat. C says k, at, cat, right? Cat, cup, catch, cut, cake, right? Okay, now D says d. Now when I say d, it's not d. See, जब हम हिंदी में d बोलते हैं, हम टंग को बहुत ऊपर हिट करते हैं. ड बोलो, ड. आप ऊपर पैलेट, जो हमारा ऊपर पैलेट है, उस पर हम हिट कर रहे हैं. ओके, बहुत हार्ड हिट करते हैं. मगर हम जब ड बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे इसको सिर्फ टच कर रहे हैं, बहुत सॉफ्टली. सी, इंग्लिश जो है ना, ये सॉफ्ट स्किल्स है. इसको हम सॉफ्ट स्किल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको जब बोलते हैं बहुत सॉफ्टली बोलते हैं. इसीलिए हमारे को अपनी टंग की प्रैक्टिस करनी है टू मेक इट रियली सॉफ्ट, राइट? क्योंकि हिंदी थोड़ी हार्ड लैंग्वेज होती है. इट्स अ फ्लैट लैंग्वेज. आपके बहुत सारे हिट करते हो ऐसे, तब करके क प ढ म ट ऐसे करके बोलते हैं हम लोग. बट इंग्लिश में ऐसे नहीं होता. इंग्लिश में हम लोग बहुत सॉफ्टली बोलते हैं. ओके, सो उसको आपको हल्के से ऊपर से टच करना है. Okay, D says d, doll. D says d,
D, d, duck. D, d, donkey. D, d, desk. D, d, dollop. Okay? Then E. E says eh. Now E is a small, it's a small sound, okay? It's like eh. Again, it's come from the stomach, right? Like eh, aisa wala, alright? It's eh, eh, eh. This is short sound. Eh, 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 eh. Like this you can practice so that you can understand the difference of two. So E says eh, 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 egg. E says eh, 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 elephant. ठीक है? Elephant. ए ए ए ए की साइन साउंड से हमें वर्ड बोलना है. ओके? देन F. F में क्या होता है? हमें फ नहीं बोलना. हम कहते हैं F says for. No, it's not for. It's that only sound. This is air. Okay, you put your teeth on the lower lip and then say this. You just have to throw air and the sound is F says fish. F says flower. Okay? Then G. G says k. Now again, ये ग यहाँ से आ रहा है गले से, right? यहाँ से क क क. जब आप देखो यहाँ पे रखोगे आपको पता चलेगा क क यहाँ थ्रो होना चाहिए. Okay? It's G says g g g goat. G says g g g gun.